Good morning, friends. Today now start vitamin source and the function. Vitamins A help in protect the eyes, help to keep skin, bone and the teeth healthy. That means किस लिए वो help होता है? विटामिन ए. विटामिन ए का मेन रोल इन आवर बॉडी प्रोटेक्ट eyes, help to keep skin, bone and teeth healthy. Source: carrot, milk, butter, dark green vegetables, sweet potatoes, deep yellow fruits and the vegetable. There are the main source of the vitamin C. And deficiency, अगर हमारे बॉडी में वो कम होती है, डिफिशियंसी होती है, तो कौन से डिसीज कॉजेज होते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस और इनएबिलिटी टू सी इन द डिम लाइट. मीन जो डिम लाइट रहते हैं नाइट टाइम उसमें हमें दिखाई नहीं देता. एंड एक्सोडर्मा, ड्राई स्किन, हमारी स्किन कैसी होती है? ड्राई स्किन हो जाती है. नेक्स्ट इज द B1. B1 विटामिन आर हेल्प इन द प्रॉपर फंक्शन ऑफ नर्व्स एंड हार्ट. नर्व एंड हार्ट्स हमारे बॉडी में जो प्रेजेंट है उनके फंक्शन के लिए वो हेल्प करता है. उनका सोर्स क्या है? देयर आर द सोर्स मिल्क, फिश, मीट, cereals, नट्स एंड पल्सेस. एंड डिफिशियंसी डिसीज, अगर वो कम हो जाता है, डिफिशियंसी होती है, तो हमारे बॉडी में कौन से डिसीज फॉर्म होते हैं? देन बेरी मीन नर्व डिसऑर्डर, मसल वीकनेस, इफिशियंसी. मसल कैसे होते हैं? वीकनेस होते हैं, नर्व डिफिशियंसी होते हैं. अनदर इज अ B9 विटामिन. B9 विटामिन हेल्प क्या करता है हमारे बॉडी में? हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी. बॉडी में ग्रोथ होती है. उनका सोर्स क्या है? डीप ग्रीन वेजिटेबल, पपाइज एंड कीवीज. देन अगर डिफिशियंसी होती है तो इम्प्रॉपर ग्रोथ, एनीमिया, फॉरगेटफुलनेस, स्लो मूवमेंट. इनप्रॉपर ग्रोथ ऑफ एनीमिया, दैट मीन्स हमारे बॉडी में एनीमिया होता है, इनप्रॉपर ग्रोथ होती है बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए कौन सा विटामिन चाहिए? विटामिन B9 चाहिए. दैट मीन्स अनदर इज द B12 हेल्प क्या करता है हमारे बॉडी में? फॉर्मेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल. हमारे बॉडी में जो रेड सेल है और हम रेड ब्लड सेल बोलते हैं, हमारे बॉडी में जो ब्लड फॉर्मेशन होता है वो कौन से विटामिन के कारण होता है? डेट मीन्स B12. देर आर द उनका सोर्स क्या है? मीट, मिल्क प्रोडक्ट. एंड अगर डिफिशियंसी होती है तो कौन सा डिसीज होता है? एनीमिया. नेक्स्ट इज द C, protect body tissue formation of the collagen and protect the essential for the gum, teeth and bone and skin. Then source: amla, kiwi, oranges and the other citrus fruits and cabbage, tomatoes, green leafy vegetables, oils. There are the main source. And there are the deficiency. Then formation of the disease in the scurvy, that means the bleeding of the gums, thyroid malfunctions and their delay is the healing of the wounds. Next is the vitamin D. Vitamin D is the absorbed calcium and phosphorus for the healthy bones and teeth. Then other source: on exposed to the sunlight, vitamin D is made in the human body from the some substance in the milk, fish, eggs and butter. Then ricket of the softening of the bone, that means bone लूज हो जाते हैं हमारे, causing the pain and फ्रैक्चर भी हो जाता है. नेक्स्ट इज द विटामिन ई, स्मूथ फंक्शन ऑफ द मेटाबॉलिज्म इनसाइड द सेल, रिप्रोडक्शन, मेंटेनिंग इफिशियंसी ऑफ द मसल सेल. दैट मीन्स सोर्स: wheat, germ, green leafy vegetable, under leaves and vegetable oil. वीक मसल, obstruct in the reproduction, skin and disorder, स्किन के डिसऑर्डर हो जाते कौन सा? विटामिन डिफिशियंसी के कारण. दैट मीन्स उनका रीजन है ई. देर आर हो किस लिए क्या हेल्प करते हैं? स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द मेटाबॉलिज्म इनसाइड द बॉडी. बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है वो क्या वो स्मूथली हो जाती है. दैट मीन्स देर आर द प्रेजेंट इन द ई विटामिन इन योर बॉडी. अनदर इज अ दैट मीन्स K, vitamin K. Vitamin K help in the clothing of the blood. Then green leafy vegetables, green cabbage, broccoli and sprout pulses yellow of the edge. There are the source and deficiency: excessive bleeding after an injury. There are the importance of the vitamins. That means vitamins A, vitamins B1, vitamins B9, vitamins B12, vitamins C, vitamins D, vitamins E and vitamins K. There are the important vitamins and source and function or deficiency, the formation of the disease. There are the most important chart.
and all the vitamins are provided. There are the figures and vegetables and fruits are the present, or see your textbook, there are the diagrams, different type of the vegetable, fruits, fish, that means mangoes, apples, or vegetables, lemons, all are the, there are the provide the vitamins in your body. Next is the a balanced diet. A balanced diet, balanced diet means all that we consume during the day together called our day diet. A diet containing adequate quantities of all nutrition, it is called as a balanced diet. Balanced diet means all we consume during the day together called our diet. All diet means different type of the foods, different type of the foods you are eat, that means there are the diet is containing adequate means the balance, equal percentage all types of the fruit, that means vegetables, then fishes and fruits are included in your foods. It is known as a balanced diet. To build a strong and healthy body, you need all nutrition in the right proportion and in sufficient quantity in your daily diet. That means to build the strong and healthy body, strong and healthy body clear all are in different type of the nutritions are they include in your food, then sufficient quantities in your daily diet. Then significance of the balanced diet and increasing the capacity to the work. जब तुम्हारे बॉडी में डिफरेंस टाइप और ऑल टाइप के विटामिन, न्यूट्रिशंस एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ऑल टाइप ऑफ द न्यूट्रिशंस जब प्रेजेंट रहते हैं तो तुम्हारे जो वर्क करने की जो कैपेसिटी वो इंक्रीज होती है. इट इज़ नोन एज अ, that means a balanced diet. Good physical and mental health, that means your good physical and mental health, net increasing the capacity of the fight resist of the disease. and another is a help is the proper growth of the body. तुम्हारी बॉडी की ग्रोथ प्रॉपर होती है, इंक्रीजिंग कैपेसिटी होती है तुम्हें फाइट एंड रेजिस्ट करने की डिसीज के लिए. दैट मीन्स नेक्स्ट इज द पिरामिड्स of the balanced diet. Pyramids, there are the 1 2 3 three sides of the pyramid, then at the top to bottom increasing their area. Then in your daily life the use of the foods, there are the different proportion for cereals and pulses, there are the different type, there are the more are the include in your food. Then fruits and vegetable, next is the milk product and meat and fish, and next is the fatty substance, oil, ghee and butter. There are the pyramid type structure and proportion of the foods are the include in your diet. It is known as the balanced diet. Balanced diet means in these pyramids how many percent foods are the includes, that means there are the totally draw in the one pyramids. And in these pyramids are include of the different type of the foods, there are the daily use in your life. Okay, next, how to get balanced diet. Ensure that we get the balanced diet from the food we eat. We can make a food pyramid. All the food which we eat in the classified into various group. The space allotted to each food group in the pyramid depends upon the proportion in which it should be included in our diet. Hence we can, it should be include, choose food from each group daily according to the space allotted to in the pyramid. How is the get a balanced diet? Balanced diet means there are the include the food, how many proportion of the use they totally are include the pyramids. Okay, next we choose some items from each group in the right proportion according to the pyramids. Pyramids में different type के जो foods है उनके group में dividation किए हो, how many percentage are the used, they totally are the denoted. Then next is the right proportion of according to the pyramid show on the page 53. We can make sure that we are getting a balanced diet. Balanced diet means different type of the foods are the include in the pyramid. That means first is the fatty substance and oil and ghee, there are the small percentage as compared to the large percentage is the milk products and meat, fish and egg. Then
more is the fruits and vegetables and more and cereals and pulses. That means more are includes, that means cereals and pulses, then fruits and vegetables, then milk product and meat and fish and egg, fatty substance, oil, ghee and butter. All how many percentage are used in your body, they totally are denoted the proportion there are the totally are include the pyramids. Okay, next, that means the fibers. If we select a daily diet which include vegetable, fruit, sprout and cereals according to the pyramids, we will get fibers in the sufficient quantity. Fibers is the sufficient quantity in these pyramids they are available of the fruits. Next, what trouble do we have to face if we do not get enough fiber from our daily diet? What care must be taken to make sure that the fiber is not lost to remove from the food we eat? Okay, next, waters along with all the all the other nutrient, the body also need an adequate supply of water. From the purpose of we must drink milk, buttermilk, lemon juice, sherbet, fruit juice, and plenty of the water. Water all through all the other nutrient and nutritions. Nutrient is the most important. There are the different type of the nutrients. There are not present only fruits, fish, egg, and vegetables, butter, milk, or milk product. There are the available in the water, that means the lemon juice, then next is the sherbet, next is the plenty of the water and milk. There are the most important, there are the used to your body. Then malnutrition means malnutrition occurs when all the nutrients that the body need are not obtained in the proper proportion from the diet. They happen when a person does not get sufficient food or when the diet is not balanced. If one is the diet exceed on the need, it is called as the overnutrition. Malnutrition means there, that means there are the lower percentage means हमारे बॉडी को जितने न्यूट्रिशन चाहिए उससे कम मिलते हैं, तो मल न्यूट्रिशंस। और ओवर न्यूट्रिशन मीन्स देन एक्स्ट्रा एक्सीड न्यूट्रिशंस आर द प्रेजेंट इन योर बॉडी, देर आर द टोटली इफेक्ट ऑन योर बॉडी। दैट मीन्स जब कम न्यूट्रिशन होते हैं, कम विटामिन्स मिनरल्स होते हैं, तो उनका ही इफेक्ट हमारे बॉडी पर आता है, और ज़्यादा हो जाते हैं, एक्सीड हो जाते हैं, तो उनका भी इफेक्ट हमारे बॉडी पर आता है। दैट मीन्स ऑब्जर्व ऑफ दिस डायग्राम, वन इज द malnutrition and another is the overnutrition. Malnutrition means they do not provide or do not growth properly over body. Another is the extra growth of the body, that means the exceed nutrition present the body, it is known as the overnutrition. And there are the deficiency of the nutrition, it is known as the malnutrition. There are the two type. One is the malnutrition means deficiency of the nutrition, and another is the overnutrition means the exceed nutrition present in the body, it is known as the overnutrition. That means the balance is the diet means the some percent the adequate percent nutritions are the present in your body. That means there are the proportion are already present in the pyramids. Okay, next is the adulteration of food. Adulteration of the food means in order to earn more profit, cheaper substance of low quality are mixture with the foodstuff. These substances are called foodstuff. This substance is called as a adulterant, and adding them to foodstuff is called as the adulteration of the food. Adulteration may even be poison or harmful to health. Such adulterated food is impure and harmful and so unfit for the consumption. That means adulteration of the food means low quality.
and this low quality of the foods are available in the market, and there are the order to and more cheaper substance of low quality are mixed with फूड स्टफ। जो फूड स्टफ रहता है, जो फूड से वो लो क्वालिटी का रहता है और उसका जो कॉस्ट है वो भी लो चीपर रहते हैं, लो कॉस्ट रहता है, लेकिन वो हमारे बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए वो कैसा रहता है, डेंजरस। दैट मीन्स इट इज़ नोन एज द अडल्ट्रेशन, मीन्स दिस फूड्स convert into the poisons। adulteration में even poisonous और harmful to the health, हमारी बॉडी के लिए वो कैसा रहता है, हार्मफुल और पॉइजनस रहता है। इट इज़ नोन एज अडल्ट्रेटेड फूड्स इज इम्प्योर एंड हार्मफुल टू अनफिट ओवर कंजप्शन। adulterant used to the adulterated food are such that they will remain unnoticed even with mixed with the food। जो हमारा फूड रहता है हाई क्वालिटी का फूड से उसमें वो मिक्स किया जाता है, और जो फूड से उसमें वो मिक्स करके जब वो बेचते हैं मार्केट में, लेकिन वो फूड लेने से हमें पॉइजनस और डेंजरस, देन मीन्स देर आर द टोटली हार्मफुल इफेक्ट ऑन ओवर बॉडी, उसका टोटली इफेक्ट हमारे बॉडी पर होता है। फूड आइटम्स एंड अडल्ट्रेंट, मिल्क, वाटर, केमिकल लाइक यूरिया एंड स्टार्च। और वो मिल्क में क्या मिक्स करते हैं, वाटर, केमिकल्स एंड लाइक यूरिया स्टार्च और वाटर केमिकल्स मिक्स करते हैं। उससे जो मिल्क की क्वालिटी क्या हो जाती है, मिल्क की क्वालिटी खराब हो जाती है, उससे हम अडल्ट्रेशन फूड बोलते हैं। चिली, ब्रिक पाउडर्स किस में ऐड किए जाती है, चिली में पाउडर्स, ओके, पाउडर्स ऑफ द पंपिंग्स, निक, पेपरकॉर्न्स, पपाया सीड्स, आइसक्रीम, वॉशिंग सोडा, पेपर पल्प वॉशिंग सोडा किस में ऐड किया जाता है, आइसक्रीम में। राइस, स्मॉल वाइट जो वाइट स्टोन रहते हैं वो राइस में मिक्स किया जाते हैं। पीनट्स, रेडिश, पेपर्स एंड स्टोन्स, ये भी क्या किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं, और जो अच्छा फूड है उनकी क्वालिटी खराब की जाती है। देयर आर द वेरी डेंजरस इन योर बॉडी।